buy less with the same amount of money in 20 years. Hey guys, welcome back to our channel. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं about money and how you can set up yourself as a new immigrant so that you can retire comfortably in a super amazing house by the time you get 50. Did you know that 88% of all millionaires are actually self-made? No पुश्तैनी पैसा, no पापा का business, and हम कुछ भी बोल लें, कोई भी excuse लगा लें कि maybe they didn't have kids, that's why they made money, or they were born in an era जब पैसा बनाना easy था, property खरीदनी easy थी, and my personal favorite कि they lucked out, वो बहुत lucky हो गए and that's why they made money. But ये सब excuses हैं and today we'll talk about a few things about money. Number one, how saving money will make you poor, not just in Canada, but anywhere around the world. Number two, how buying dumb shit as new immigrants makes us broke. Number three, when should we start investing our money after coming to Canada? And finally, how much money should you invest? There will be a part 2 of the video जहाँ पे हम बात करेंगे कि हम किस में इन्वेस्ट करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों में डालते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डालते हैं कि नहीं डालते, but all in all, we'll tell you how we invest our money so that we retire millionaires. So let's get started. अब हमारे घर में मॉम डैड ने हमें हमेशा सिखाया है कि you should always save for a rainy day. And that is 100% correct and far better than not saving at all. But saving in a bank account or in cash is losing money every single day, every single year, and that's because of inflation. Now let's assume that you buy a winter jacket for $100. तो अगर 2% इन्फ्लेशन, 2% महंगाई हर साल हम करें तो अगले 20 साल में वो सेम जैकेट जो $100 की आज है दैट विल कॉस्ट यू $150 क्योंकि महंगाई तो बढ़ेगी ही. तो अगर आज हमारे पास $1000 हैं तो हम अभी तो 10 जैकेट्स खरीद सकते हैं $100 की, बट इन 20 ईयर्स जब जैकेट का प्राइस $150 हो जाएगा तो वी कैन ओनली बाय 7 ऑफ दीज. तो हमारे पास पैसे उतने ही हैं लेकिन वी कैन बाय लेस विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी. एंड इसीलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट योर मनी इन एसेट्स. Not just कि it's the smart thing to do and you will retire a millionaire, but also because अगर आपके पैसे बैंक में पड़े रहेंगे तो you will lose money every year to inflation. And I am not a person जिसको पैसे लूज करना पसंद है. अब जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि क्या कंजूसों वाली बात करते रहते हो, क्या पैसा करते रहते हो, क्या पैसा करोगे कमा के जब उड़ा ही नहीं सकते. तो एंड उन लोगों से हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 में. बट अभी हम बात करते हैं द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग $500 एवरी सिंगल मंथ वर्सेज सेविंग दैट $500 इन योर बैंक अकाउंट. एंड उसके लिए चलते हैं मेरे लैपटॉप पर. तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं. इफ़ यू पुट योर मनी इन योर सेविंग्स अकाउंट वर्सेस इफ़ यू इन्वेस्ट योर $500 इन अर्न इन्वेस्टमेंट अकाउंट. तो जो इंटरेस्ट रेट होगा ऑन अ सेविंग्स अकाउंट आज की डेट में द बेस्ट इंटरेस्ट रेट दैट यू विल गेट इज 1.5%. हमने पिछली बहुत सारी वीडियोस में बताया अगर आप ऑनलाइन बैंक में डालते हो तो यू विल गेट अ मच हायर इंटरेस्ट रेट. बट इफ़ यू पुट दैट मनी इन स्टॉक मार्केट you can expect a 6% return long term. तो overall contribution दोनों cases में same है. $500 every single month for 30 years will be $180,000. And if you look at the compounding interest rate, the balance in 30 years will be $227,000 if you put it in your savings account. तो थोड़ा सा बढ़ेगा because it's 1.5% interest rate, but it's still just $227. And the big difference is if you invest your money, you will make upwards of $500,000, which is a massive difference. But one thing that we need to take care of is that this money is worth a lot less in 30 years, and that's because of inflation जो 2% तो होएगी. So this $227,000 which is kept in our savings account is actually just worth $125,000. Just imagine आपने $180,000 contribute करे हैं, it's actually worth less. इसीलिए हमने कहा था कि if you are keeping your money in savings account, you actually lose money. But if you are investing your money, your $500,000 will seem like $278,000 in 30 years, which is still more than what you contributed, and therefore the money is growing, and that's the reason why we should be investing, because otherwise you will be losing money, and it's very clear from this example. But we are not investing $500 every single month. We are in fact investing $2,000 every single month, and we'll be left with about $2 million in 30 years if we invest at 6%. And वैसे तो हमारे पास $2 million होंगे, but again inflation की वजह से it will seem like $1 million because you lose money, you lose value. So bank account में $2 million होंगे,
but it will only buy stuff that you can buy today for $1 million because of inflation. But guys, it's still a lot more than if you were keeping it in the savings account, and yes, it will not last. अगर retire हो रहे हो 30 years के अंदर, so $2 million will also be less, to be honest, but it's still awfully lot more than $900,000 that you will have if you do not invest your money. And one disclaimer here, this is before tax, and obviously you will also be paying tax on it. So just imagine 909,000 पे भी tax भी देना है, so this is not a lot of money if you are retiring. But you can see how powerful it is to invest versus save the money, and that's the point that we were trying to make. Where and how we invest these $2,000 we will discuss in our next video, but let's come to our favorite topic, which is spending money on dumb shit. ठीक है? One done. इसे थोड़ा सफाई कर दें इस पेपर से. एक साल से ऊपर हो गया हमें आए हुए, and we have seen so many people buy so many dumb things when they come here, especially when they are students. Things that they don't need, or worse, which is things that they can't afford to pay for. एक example देते हैं. Our friends moved into a very good house, and उनकी basement जो है, they wanted to rent it out. So there are, a couple of students who are now working. They actually wanted to rent it out, and काफी negotiation के बाद they decided कि $1,200 का rent वो pay करेंगे, which is pretty amazing. And 1 week में they moved into his basement, and our friend was shocked. They came with their stuff in their Audi Q7. तो नवजोत ने पूछा भाई कितने की पड़ती है, and he said that he bought it second hand with an 11% interest. तो उसको गाड़ी पड़ती है 1100 की plus $450 of insurance, which is $1,550 plus fuel plus maintenance, which is much more than his rent. Which is so crazy, and it's very very common. लोग यहाँ पे आते हैं and then they realize कि अरे वाह ये तो 0% डाउन पे गाड़ी मिल रही है, सही है ले लेते हैं, and then they realize shit they can't pay for it. And that's what happened with him. He had to downsize his house to pay for the car, and जब zero down पे हम खरीदते हैं तो we are upside down on the loan anyways. तो हमें अगर बेचनी है वो वाली गाड़ी तो we have to actually pay the money because we bought it on zero down. So that's what happens when you actually try to buy things which are very expensive and you can't afford them. अब ये तो एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया, बट वी हैव सीन पीपल जिनकी सैलरीज इज अपवर्ड्स ऑफ $150,000 बट दे स्टिल आर नॉट एबल टू सेव एनीथिंग. इसीलिए बजटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी हैव द रूल्स ऑफ 10, 25 एंड 35, जिसे हमने अपनी पहली वीडियोस में भी डिस्कस करा है. So we need to make sure that we are buying things that we actually need, and buying expensive clothes and buying expensive wallets, purses, they don't make you happy. And नीचे बहुत सारे लोग ये लिखेंगे कि अरे क्या कंजूस वाली बातें कर रहे हैं, again, कमा रहे हो तो फिर खर्च भी करो उस चीज़ को. In fact, we have a very decent life. We actually pay $1,900 for a very amazing view that you have seen on our Instagram videos. On Simran's birthday, I actually gifted her an Apple Watch, and we are actually taking a very expensive trip in the next few months, and that you will see on the channel. The idea is not about कंजूस या not कंजूस या ज़्यादा खर्च करना कम खर्च करना. It's all about spending on a budget, and we have budgeted 10% of our monthly income towards fun, and that's where we spend on luxuries. मैं तो कुछ नहीं कही है नहीं, if you're not very friendly. ये तो शोर का मचा रही है, और ये हो रहा है हमारे पीछे बर्ड्स ही बर्ड्स हैं. वो कनाडा गूज है, वो भी कनाडा गूज है. इसको गूज ही बोल सकता है नहीं, कनाडा गूज है ना. ये देख लो चारों तरफ. वीडियो नहीं बनाने दे रही. Next comes when should you start investing when you come to Canada. अब हमें इसका आंसर 1 साल बाद रियलाइज हुआ, एंड हमने एक मिस्टेक भी करी, बट इसका आंसर डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स एंड सर्कमस्टांसेस. तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एंड देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ व्हाट सूट्स यू. तो पहले लेट्स टॉक अबाउट व्हेन नॉट टू इन्वेस्ट. एंड सबसे पहले इसमें आता है व्हेन यू डू नॉट हैव अ जॉब. जब जॉब नहीं है तो यू आर नॉट फीलिंग सेटल्ड, एंड देयरफॉर यू शुड नेवर इन्वेस्ट देन. हमारे लिए दैट एक्चुअली हैपेंड इन September 2020, which was about 6 months after we came to Canada, and it was about 2 months after I got my job. जब तक जॉब नहीं मिल जाती, जब तक आप सेटल नहीं फील करते, जब आपको लगता है कि आपकी जॉब अब चली नहीं जाएगी बिकॉज इट्स unstable, you should not, you should try to keep the money in your bank account and not invest it where you cannot take it out. Number 2 is when you don't have an emergency fund. अब बहुत लोग कहते हैं कि दिस शुड बी 3 to 6 months ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस. अब हमारे मंथली एक्सपेंसेस इज $4,500, तो हमने अपने बैंक अकाउंट में सबसे पहले $20,000 का एक एस्टिमेट लगाया कि ये तो होने ही चाहिए. इन केस अगर हमारी इनकम्स बंद हो जाए तो वी विल बी एबल टू सस्टेन आवरसेल्व्स विद दिस इमरजेंसी फंड. Number 3 is when you have debt.
अगर आपके पास कोई भी ऐसा लोन या डेट जो 4% इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है, यू शुड ऑलवेज यूज योर सेविंग्स टू पे दैट ऑफ। अब हमारे केस में वी हैव अ होम लोन एंड वी हैव अ कार लोन। होम लोन हमारा 1.29% पे है एंड हमारा कार लोन इज एट 0%, विच इज वे लोअर देन 4%, सो इट्स नॉट वेरी रियली एप्लीकेबल ऑन अस। बट देर आर पीपल हु हैव एजुकेशन लोन्स, हु हैव पर्सनल लोन्स, who have credit card debt which is much more than 10%, and for those people maths is very very simple। $1000 अगर आप इन्वेस्ट करोगे मार्केट में, यू गेट अ 5% रिटर्न, तो यू गेट $50 पर ईयर एज रिटर्न। बट अगर आपका डेट जो है वो 10% का है एंड इफ यू इन्वेस्ट दोस $1000 इनटू योर डेट, you'll actually save $100 in interest which is in your pocket. Plus debt pay करने में there are tax advantages as well. So if you have a debt which is of interest rate more than 4%, pay that off with the savings that you do before you invest. And lastly, do not invest your money if you're saving for the down payment. And यही गलती हमने करी थी। As soon as we felt settled, हमने TFSA में invest करना शुरू कर दिया, which is $500 for me and for the both of us $1000. अब जब डाउन पेमेंट की बारी आई, जब हमने प्री कंस्ट्रक्शन को क्लोज करना था, तो वी वर शॉर्ट ऑफ कैश, तो हमें अपने इमरजेंसी फंड में से भी निकालना पड़ा, TFSA में भी से निकालना पड़ा, एंड वी लॉस्ट अराउंड $200 बिकॉज उस टाइम पे स्टॉक्स जिसमें हमने इन्वेस्ट किया था वो उस टाइम डाउन थे। सो कीप द मनी इन योर बैंक अकाउंट जब तक आपका घर क्लोज नहीं हो जाता। घर क्लोज करने के बाद एक फ्रेश बजट बनाओ जैसे हमने करा। नाउ वी आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट $2000 एवरी मंथ। अब अगर आप यहाँ पे आते हो और आप ये सोचते हो कि 2-3-4 साल तक हमने घर नहीं खरीदना, देन इट्स फाइन, यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड इट्स काइंड ऑफ मीडियम और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाती है एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट जैसे हमारे केस में वी एक्चुअली थॉट कि हम 1 साल के अंदर घर खरीद लेंगे, एंड उस केस में वी शुड ऑलवेज सिट ऑन कैश एंड ओनली स्टार्ट इन्वेस्टिंग आफ्टर यू बाय द हाउस। अब बाइंग द हाउस में भी एक रूल है, वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस सेवरल टाइम्स, इट्स कॉल्ड रूल ऑफ 35, दैट योर cost of ownership of the house, which includes everything, all the costs related to the house, should be less than 35% of your carry home household income. And the reason why rule of 35 follow करना बहुत ज़रूरी है, because if you do not do that, you will actually spend a lot more on the mortgage and you will have less money to invest your money in stock market and other things. And अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे घर में भी तो हम डाल रहे हैं, तो mortgage जो दे रहे हैं वो भी तो investment है, which is true. But the problem here is that जिस घर में आप रह रहे हो, that is never an investment because it can never give you a profit unless you actually sell off and go back to India or your home country or you downgrade. हम हमेशा अपग्रेड ही करते हैं अपना घर और उसके अंदर हम हमेशा पैसे डालते ही हैं टिल द टाइम यू रिटायर एंड पे ऑफ योर एंटायर मॉर्गेज। तो तब तक तो एटलीस्ट यू विल नेवर मेक अ प्रॉफिट एंड देयरफॉर नेवर ट्रीट द हाउस दैट यू आर लिविंग इन as an investment because it will always take money out of your bank. And that's why rule of 35 in the house that you will be living in is very really important. And this brings us to the last part of the video, how much should you invest? अब हमारे हिसाब से you should invest at least $500 per month per person. अब इस नंबर पे हम कैसे आए? This is the amount जो आप अपने tax free savings account में डाल सकते हो and can invest into different stocks and ETFs. And in 30 years, you can take money out of this account एकदम tax free. यूजुअली आप अगर किसी और अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो या कहीं और इन्वेस्ट करते हो, जब आप वो पैसा निकालते हो, यू हैव टू गिव कैपिटल गेन टैक्स। बट विद TFSA देयर इज नो टैक्स व्हेन यू टेक मनी आउट ऑफ द अकाउंट। अब इस पे एक लिमिट है विच इज $6000 पर ईयर पर पर्सन, इसीलिए डिवाइडेड बाय 12 वी केम अप विद दिस नंबर ऑफ $500 पर मंथ पर पर्सन। बट वी इन्वेस्ट मोर बिकॉज व्हाई नॉट? पहले हमने अपना इमरजेंसी फंड बनाया विच इज $20,000, then we saved for the down payment of the house. उसके बाद हमारे पास ऐसा कोई भी डेट नहीं है which is more than 4% interest, and now we are actually investing 20% of our household income. तो हमारे हिसाब से the minimum that you should invest is $500 through your TFSA account all the way to 20% of your household income, which is carry home household income, that you can put in various things so that you retire a millionaire. एंड हमने अपनी बजट वाली वीडियो में शेयर किया था कि वी सेव 50% ऑफ आवर हाउस होल्ड इनकम एंड इन्वेस्ट 20% कर रहे हैं, तो बाकी का क्या कर रहे हैं? तो वी आर स्टिल सेविंग रेस्ट ऑफ द मनी बाय री इन्वेस्टिंग इन आवर बिजनेस विच इज द फर्स्ट जॉब एक्सेलरेटर और यूट्यूब, or if I want to learn a certain course, or for Navjot to learn courses to become a better teacher, or camera equipment so that we can improve the quality of our videos. And lastly, a lot of people will say that आप बड़े lucky हो because you don't have to pay $2,000 towards daycare of your child. और जब इन्फ्लेशन होगी तब आपको पता चलेगा, जब इन्फ्लेशन 4% हो जाएगी या फिर जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाएगी तब आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन होगा एंड ऑल दिस सेविंग दैट यू आर डूइंग विल एक्चुअली जस्ट गो अवे. एंड आई एक्चुअली कॉल दिस बुलशिट थिंकिंग.
हमारे कंट्रोल में जो है वही हम कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि 4% इन्फ्लेशन हो जाएगी तो हमारी जो सेविंग है वो कम हो जाएगी, या थिंकिंग कि गवर्नमेंट जो है वो 40% टैक्स लेना शुरू हो जाएगी, we actually think that we can actually earn that extra $2,500 every single month, and that's what you should be concentrating rather than concentrating on things that you cannot control. You cannot control inflation, you cannot control childcare expense, you cannot control taxes. What you can control is your income, how much money comes into your account, kitni mehnat kar sakte ho, and that's what we should be concentrating on. That's called abundance thinking, and that's really, really important. And that's it for today. But next video mein we'll discuss about how we spend these $2,000. Invest. How we invest. 1, 2, 3 go. That's it for today. Next video mein hum baat karenge how we invest these $2,000 and what platforms do we use. And the big one, क्या हम cryptocurrency में invest करते हैं? And the answer is yes, but we'll talk about all that in our next video. वीडियो अगर बढ़िया लगी तो प्लीज लाइक करके जाना, एंड गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारा हमेशा गोल ये रहता है दैट हमने जो मिस्टेक्स करी यहाँ पे आने के बाद वो मिस्टेक्स आप नहीं करो, एंड योर कैनेडियन जर्नी व्हेनेवर ट्रैवल बैन ओपन्स एक्चुअली स्टार्ट्स ऑन द राइट फुट। दैट्स ऑल वी वांट, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।